Yes, good morning, students, all of you. You know that yesterday we discussed about the faith or the problems through the activity. I just showed you one PPT and accordingly we discussed the problems. Whenever we are in stress mood, we are having some problem, we try to find out the solutions, but when we don't find any way out, we turn to God and we pray to God to have some solution of that particular problem which we face. And then we started reading with the chapter also. I showed you some images of the post office, the post box, the letter, the postcard, envelopes, etc. Just to introduce you with that. And then we discussed about the old means of communication and the new means of communication. And after that, we started reading in the beginning what we read that is about the theme of your chapter that was given to you in the very first line. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. And we discussed that we should have faith in ourselves and faith in God also. So accordingly, there is one activity given to you in the beginning of your book. You can see in your book activity. One of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teachers or with your friends and the meaning of these words: counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record. All these words are given to you. You can consult the dictionary also. You can discuss with your parents, anyone elder in your family, if they have used any money order anytime. Consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your languages? Try to find out. Okay. Now, I suggest you, if it is possible for you people, try to get one money order form from the post office. It's not very costly. Inside the post office, go to the counter, marked money order. See the steps they have given. Please, ma'am, mute them all. No problem. I'll discuss at the end, whatever the problem is. Pramila, ma'am, please mute all. Yes, ma'am. Thank you. Yes, beta, listen carefully. For this activity, what you have to do, try to find out some money order from here and there, or you can purchase it from the post office. आप पता कर लीजिए अपने पेरेंट्स से, किसी ना किसी के लिंक में जरूर होगा, उन्होंने कभी फिल किया होगा जरूर, and accordingly you can get the guidance from them also. Purchase one money order form from the post office. Go to the counter where it is written money order. वहाँ अलग अलग counters बने होते हैं post office में, अगर आपने visit किया हो. But a money order form by paying 50 पैसा, 50 पैसा, अब इसका थोड़ा रेट बढ़ चुका होगा. It's not 50 पैसा now. To the person behind the counter कि आप पेमेंट करके मनी ऑर्डर उनसे परचेज कर लीजिए. Fill in the appropriate boxes in the form, preferably in block letters. Block letter में जो भी उसमें columns दिए होंगे, fill that. Pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges. कि आप जितना पैसा किसी को भेजना चाहते हो उसमें अमाउंट भरिए, उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, दैट यू हैव टू पे. टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. और अपने रिकॉर्ड के लिए आपने क्या करना है, उसकी एक काउंटर फॉइल बनी होती है ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने इतने पैसे किसी को भेजे. वो आपने काउंटर फाइल जो है वो अपने पास रखनी है. फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म given below using the clues that follow the form. They have given you the sample of the money order also. तो इसको आपने कोशिश करना है कि परचेज कर लीजिए पोस्ट ऑफिस से और इसको फिल करना है, सो दैट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट दिस वे ऑफ सेंडिंग द मनी. यू कैन
टेक इट इन रियल फॉर्म, राइटिंग द नेम ऑफ समवन टू योर फ्रेंड, और किसी भी अपने रिलेटिव को या अपने ही फैमिली किसी मेंबर के नाम को लिखकर आप एक्चुअल में भी सेंड करके देख सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में इस एक्टिविटी को प्लीज ट्राई टू डू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू परचेज देन गेट इट फोटोस्टेट फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में ये उन्होंने पूरा सैंपल दिया हुआ है, इसको फोटोस्टेट करवाइए, fill it, and you have to paste this money order form in your notebook. Clear? This money order form after filling is to be pasted in your notebook. And one more information I want to convey before we start with the reading of the chapter. Yesterday I got one query that you are to use only one notebook, beta. No separate notebooks are to be used, only one notebook in which you will be writing the text part as well as the grammar and the writing part. Divide it into two parts, one for the literature and the second part will go for the grammar and the writing part. Okay, now when you will fill this, after that we will discuss all these points, but let me read so that you should know it. Think about who you will send the money to and how much might want to send money for a magazine subscription or to a relative or to a friend. कि आप किसी के लिए भी ये अमाउंट जो है भेजना चाहते हो, कितना भेजना चाहते हो, और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योरसेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर। आपस में आप फ्रेंड्स कर सकते हो कि एक सेंडर हो गया, दूसरा उस मनी को रिसीव करने वाला हो गया, आपस में ही एक्सचेंज कर सकते हो। यूज ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म at the nearest post office to see how it is done. See how your partner enjoys getting money by posts. Then notice that the form has three parts: the money order form, the part for official use, and the acknowledgement. What would you write in the space for communication? So after all these things and filling the form, you have to fill all these blanks given to you on this page number 3. This is your homework for today. Okay, please note down on page number 3, after filling the form, pasting it in your notebook, you have to fill these blanks on the book only. These blanks are not to be written in the notebook, they are to be filled on the book only. Clear? This is your homework for today. Now let's have reading of the chapter. Yesterday I discussed some part of the story with you, some nutshell I have given, but still let me start from the very beginning. Before you read me first lines ko chhodkar where we discussed about the theme. They are giving you the introduction about this. Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lenko's letter reach God? Does God send him the money? No, it is direct. It's going on. Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. So we will get the answers of all these questions after reading of the chapter. So please look at your book if you have book with you. Otherwise, you can look at the screen. I'm sharing the screen of the chapter with you. Please look at the lines and note down the difficult words. Any word which you feel difficult for you, note down the meaning of that word and try to understand the story. Yesterday we discussed that there is a farmer, Lencho, and he had problem due to rainfall. There was excess of rainfall and his crops got destroyed. How it happened? Let's read in the story. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So he was having only one house that was in the whole valley, entire valley. There was only one house, and sat is word is used for the house, not for any person. कि उसका घर जो था वो बैठा हुआ मतलब it was situated on the crest of a low hill. Crest means on the top of a hill. कि एक छोटी सी पहाड़ी थी, बहुत ऊंची नहीं थी, low hill थी, उसकी top के ऊपर उस वैली में ये अकेला ही घर था. The only one, मतलब एक ही अकेला घर था. There was no house nearby. From this height, कि जितनी ऊंचाई पर उसका घर था, उस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से उसके घर में जब वो उस ऊंचाई पर चोटी पर अपने घर में जाते थे तो he can see the river from that height
एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज के खेत जो थे वो उसको नजर आते थे, डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों के साथ लहलहाते हुए, डॉटेड फुल ऑफ flowers that always promised a good harvest. Pramila ma'am, please check someone has unmuted. Some disturbance is there for the sound. I'm hearing some sound from that. Yes. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कि जब वो उस river को देखता, उस ripe कॉर्न को देखता, पके हुए अपने अनाज के खेतों को देखता जो कि फूलों से लहलहा रहे होते, डॉटेड मीन्स इधर उधर झूम रहे होते उसके फूल, इट गिव्स अ गुड प्रॉमिस, उसको एक अच्छी प्रॉमिस मिलती है, उसको एक होप मिलती दैट ही वुड हैव अ गुड हार्वेस्ट. He was very happy that his fields were growing and he would have good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और उसके माइंड में क्या आता कि there is only a little need of rain. थोड़े से उसको डाउनपॉर मीन्स एक बौछार, पानी की एक बौछार, और एटलीस्ट ए शार मीन्स हल्की सी बारिश हो जाए और उसकी खेतों की जमीन जो है सिर्फ इतनी सी उसको जरूरत थी, अदरवाइज ही वाज हैविंग गुड क्रॉप. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Please note down here what situation is given. कि उसके खेत जो थे, अच्छी फसल खड़ी थी, देख रहा था, खुश हो रहा था देखकर, और उसको क्या महसूस हुआ कि हल्की सी उसको पानी की बौछार जो है, बारिश की जरूरत थी. तो सारा टाइम वो क्या कर रहा था, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारा टाइम मॉर्निंग में वो क्या करता रहा, who knew his, लाइन देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है, और इन बिटवीन द क्लॉज इज एडेड, who knew his fields intimately, this is the clause added in between, had done nothing, line कहाँ से जा रही है हमारी, Lenko had done nothing else but see the sky towards the northeast. This is the actual line. In between what is added, the clause is added, one more clause just to verify or clear the meaning of the first part. He says throughout the morning Lenko, who knew his fields intimately, intimately means very closely, कि वो अपने खेतों के बारे में उसको बहुत अच्छे से पता था, वो जानता था कि उसके खेतों को किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, ना बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी. इट वॉज ओनली अ लिटल शार, a little downpour that the fields needed. So he knew his fields very well and he had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हुए बादलों की तरफ देखता रहा, आकाश की तरफ देखता रहा, in the hope of getting रेनफॉल की हल्की सी बारिश जो थी, जिसकी जरूरत थी उसके खेतों को, वो क्या उम्मीद कर रहा था, इन दिस होप दैट ही वुड गेट अ लिटिल रेन एंड हिज फील्ड्स विल ग्रो एंड ही वुड गेट अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल जो थी उसको मिल जाएगी. सो ही केप्ट ऑन लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड टुवर्ड्स द स्काई इन द होप ऑफ रेन. नाउ we are really going to get some water, woman. See the statement given to you in the inverted commas, where we use in the reported speech. We have indirect and direct form. Two parts of speech are there. And when we write the statements of the speaker as it is spoken by that person, that is given in the inverted commas. So in the direct speech, we are getting speech of Lencho. क्या कहता है वो, वुमेन हियर रेफर्स टू हिज वाइफ, कि अपनी वाइफ को क्या कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्योंकि उसको आकाश में बादल नजर आ रहे थे, ही वाज होपफुल. तो अपनी वाइफ को क्या कहता है कि अभी हमें जल्दी ही पानी मिल जाएगा, थोड़ा सा, जितनी की हमें जरूरत है खेतों के लिए. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. See again the statement given in the inverted commas, that means it is given to you in the direct form. So what does she say? उसकी वाइफ वुमेन जो थी वो क्या कहती है, was preparing supper, खाना बना रही थी, तो उसको क्या जवाब देती है, yes, God willing, कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो, because we cannot do anything if the God does not will, कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो ये काम होगा. ठीक है ना, हम यही कहते हैं ना कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, हम कुछ चाहते हैं लेकिन भगवान कुछ और ही करता है. तो इसी तरीके से वो, उसकी वाइफ को भी भगवान में बहुत विश्वास था, तो वो क्या कहती है उसको, कहती हाँ हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी मिल जाएगा खेतों के लिए. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all, come,
for dinner. See again statement given in the inverted commas, direct speech. Older boys, यहाँ क्या रेफर कर रहे हैं कि जो लेंचो के बेटे थे, बड़े बेटे लड़के जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे जो थे वो घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all, जब तक कि उस वुमेन ने, वुमेन यहाँ कौन है, उसकी वाइफ, कि उसकी वाइफ ने उनको सबको नहीं बुलाया और आवाज कैसे आवाज देती है, कम फॉर डिनर, कि आप सब खाने के लिए आ जाओ. It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. क्या हुआ कि जैसे कि उसने उम्मीद की थी, प्रेडिक्टेड होता है व्हेन वी टेल समथिंग बिफोर हैंड, भविष्यवाणी करना जिसको कहते हैं. बिफोर हैंड कोई बात बताई जाती है तो दैट इज प्रेडिक्शन, कि हम कोई भविष्यवाणी कर देते हैं. और यहाँ क्या था, उसकी भविष्यवाणी क्या थी, दैट देयर वुड बी रेन, अ लिटिल शार. और बादलों को देख के उसको क्या लग रहा था कि बारिश होने जा रही थी, और उसकी उम्मीद जो थी वो पूरी हुई, ठीक हुई, जो उसने सोचा था वैसे ही होना शुरू हो गया. क्या हुआ, जल्दी ही, जस्ट एज इट वॉज ड्यूरिंग मील टाइम, कि अभी वो खाना ही खा रहे थे, कि जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था, जैसा उसने सोचा था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. तो वो क्या देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड से बादलों के बड़े बड़े पहाड़, नोट डाउन, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स किसको कहा गया, बादलों के, पानी से भरे हुए, बारिश के जो बादल आ रहे थे उनसे भरे हुए बादलों को क्या कहा गया, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, उसको पास आते हुए नजर आ रहे थे. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि बारिश होने जा रही थी. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ताज़ी और मीठी लग रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेयर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. और मैन हियर रेफर्स टू लेंचो, और वो बाहर जाता है, कोई और रीजन नहीं था बाहर जाने का, जस्ट टू हैव द प्लेयर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी, कि अपने बॉडी के ऊपर उस रेन को वो उसका टच फील करना चाहता था, सो दैट ही कुड फील हैप्पी. खुश हो रहा था कि उसके बाद खेतों को थोड़ी सी बारिश के पानी की जरूरत थी. एंड द रेन स्टार्टेड, हिज होप वाज फुलफिल्ड, जो वो चाहता था वो हो गया, इसलिए वो मजा लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए बारिश में बाहर निकल जाता है. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड he exclaimed, और जैसे ही वापस आता है तो he exclaimed means in very surprising manner. You do in the reported speech the exclaimed word, exclamatory sentences also, and that shows astonishment and surprise. बहुत हैरान होकर क्या कहता है, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. See again the statement given in the inverted commas, exact words of Lancho we are getting. Why he says like this? He says there are not raindrops falling from the sky. उसको क्या लग रहा है, आकर अंदर क्या कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं. They are new coins. क्या लग रहा है उसको कि जैसे सिक्के गिर रहे हों, नए सिक्के गिर रहे हों. वाइट होती है ना बारिश की बूंदे, एकदम से उसको पानी वाइट लग रहा है, तो वो क्या कह रहा है, ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं जो कि गिर रहे हैं. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. See the comparison he gives. कहता कि जो बड़ी बूंदे हैं पानी की, बारिश की, वो 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो लिटिल वंस आर 5, वो 5 सेंट पीसेस हैं. मतलब उसका क्या क्या वो उम्मीद कर रहा है कि उसकी अच्छी फसल हो जाएगी, वो अच्छी फसल उसको पैसा देगी, अच्छा उसको बेचेगा और उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा. दैट्स व्हाई ही इज कंसिडरिंग दोज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एज द new coins. Please try to understand, note down, this is a question given at the back also, कि why he considered those raindrops as new coins, because he was looking the money out of that, कि उस फसल को बेचने के बाद जो उसको पैसा मिलना था, he was looking for that money, was hoping for that money. उसके मन में उम्मीद जाग रही थी कि अच्छी बारिश के साथ जितनी उसको जरूरत थी खेतों को, उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, और अच्छी फसल को जब वो बेचेगा बाजार में तो उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा. इसलिए वो क्या सोच रहा है कि जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के पीसेस हैं. मतलब उम्मीद कर रहा है, जैसे हमारे होते हैं ना 5 का सिक्का है, कॉइन है, या
10 रुपीज का कॉइन है, तो ऐसे ही उनके ये सेंट जो है उनकी करेंसी है, उस वे में वो बात कर रहा है, पैसे उनको पैसे समझकर वो देख रहा है एक तरह से, बिकॉज ही वॉज हैविंग होप टू गेट दैट मच मनी आउट ऑफ दैट. See in the next passage, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. Now he was very much satisfied. बहुत संतुष्ट था, खुश था कि उसको पानी की जरूरत थी और पानी उसको मिल गया. सो ही वॉज हैविंग सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन. कैसा एक्सप्रेशन देता है? जैसे कि बहुत संतुष्ट था, बहुत शांत था, खुश था. सो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स wrapped in a curtain of rain. तो क्या देखता है कि उसके खेतों में जो पका हुआ अनाज था, उसके ऊपर जो फूल थे, they were all covered with rain. ऐसा लगा कि उसके ऊपर बारिश का एक कर्टन, एक पर्दा सा जो है वो बिछा दिया हो, फूल उसमें लिपटे हुए हों. बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. तेज हवा जो थी वो चलने लगी. पहले क्या थी? हवा फ्रेश थी, स्वीट थी, अच्छी लग रही थी. gentle wind was blowing, but now suddenly strong wind started blowing, जैसे कि आंधी तूफान आता है. Along with the rain, very large hailstones began to fall. Please underline and note down क्या हुआ? अचानक एकदम से कैसे change हो गई कि suddenly a strong wind began to blow, बहुत तेज हवा चलने लगी. और उसके साथ क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो थे वो गिरने शुरू हो गए. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल स्टोन्स? ओले पड़ते हैं, जो गड़े जिसको हम कहते हैं, ठीक है. तो व्हाइट कलर में बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जैसे गिरते हैं, ऐसे बड़े बड़े हेल स्टोन जो थे वो गिरने शुरू हो गए. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उसके खेतों को इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए था. ही नीडेड ओनली अ लिटल एंड अ स्मॉल शार और अ डाउन फॉर ओनली, थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी. लेकिन अब क्या हुआ? उसके बारिश के साथ हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए, ओले गिरने शुरू हो गए. These truly did resemble new silver coins. See the hope, still he had hope. अभी भी उसके माइंड में क्या आ रहा था कि जो हेल स्टोन्स गिरे हैं, बिकॉज दे वर वाइट इन कलर. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस कि व्हाई ही कंसिडर दोज एज न्यू सिल्वर कॉइन्स. कि पहले जब गिर रही थी बारिश की बूंदें, तो वो कहता है कि बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस हैं. लेकिन अब जब हेल स्टोन्स गिरने शुरू हुए, तो व्हाट ही कंसिडर्स, ही फेल्ट दैट दीज ट्रूली रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स. न्यू सिल्वर कॉइन, सिल्वर कैसा होता है? वाइट, चमकदार. तो उस वो हेल स्टोन्स को कंपैरिजन कर रहा है कि वो बिल्कुल वाइट सिल्वर जैसे कॉइन्स जो थे उसको नजर आ रहे थे. क्योंकि जैसे ही हेल स्टोन शुरू हुए गिरने, तो ही हैड अ होप इन हिज माइंड. अभी उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा कोई नुकसान होगा. उसको लगा कि थोड़े से ओले गिरेंगे, हेल स्टोन्स गिरेंगे एंड द रेन मे स्टॉप. He could not expect something else. कि गलत नहीं सोचा उसने. He was positive and having this idea कि जो hail stones हैं, they were giving the look of new silver coins, shining just like silver. और उसको नए coins, और उसको लग रहा कि और अच्छे पैसे उसको मिल जाएंगे अपनी फसल से. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और लड़के भी बड़े खुश हो रहे थे, उसके बेटे बहुत खुश हो रहे थे. They also ran out in the rain, बारिश में बाहर भीगते हुए अपने आप को आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं. And they were collecting those frozen pearls. Underline this word. What is referred here to the frozen pearls? Frozen pearls here refers to the hailstones that were falling from the sky. कि जो white hailstones गिर रहे थे, they were just like the pearls. Pearls क्या होते हैं? मोती. और जैसे जैसे वो गिरते जा रहे थे, वो जमते जा रहे थे. So they were called as frozen pearls. The hailstones were compared to frozen pearls, कि जमे हुए मोती नजर आ रहे थे उसको चमकते हुए. And the boys were enjoying. बारिश में वो भीग रहे हैं अपने आप में और खुश हो रहे हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करते हुए. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. Again, see the statement given in the inverted commas. The direct speech is used here. We are getting so many sentences in the direct speech, and you should try to collect all these sentences, mark these sentences, and try to change them in the indirect form for having your practice of grammar topic. Okay, so please note down all these statements, mark these statements which are coming in the direct form. We'll have this chapter in detail, how to change, but you have already done in your 8th class, in your 9th class. Try to solve these sentences in the
indirect form, so that you should know where you are finding the problem. So according to this, what he feels, it is really getting bad now. क्या लगता है उसको? जैसे उसने देखा कि लगातार बारिश होती जा रही है, ओले गिरते जा रहे हैं, now he was very much sad, depressed, और क्या लग रहा है? बड़ा हैरान होकर, बड़े परेशानी की हालत में कह रहा है कि it is really getting bad now, कि हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है. I hope it passes quickly, और क्या उम्मीद करता है कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा. Means still he was positive. He was not thinking about the negative side. उसके माइंड में बिल्कुल ऐसा विचार नहीं आया कि कुछ गलत हो सकता है, और क्या उम्मीद करता है कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा. मतलब जो बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे. बट what is reality? It did not pass quickly. लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं हुए. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Please note down here, underline, कितनी देर तक वो hailstones गिरते रहे? For an hour. 1 घंटे तक लगातार वो hailstones गिरते रहे, और सारा एरिया, उसका घर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, उसके अनाज जो पके हुए थे, खेत, एंड ऑन द होल वैली, पूरी घाटी जो थी वो ऐसे हेलस्टोन्स के साथ भर गई, और उसके खेत जो थे वो बिल्कुल वाइट. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक के साथ उनका ढका हुआ हो. सी द कंपैरिजन बीइंग गिवन टू यू हियर, नोट डाउन इट. Why he is calling as if covered with salt? Because the whole area, his fields and everything in that valley was covered with hailstones. That's why it is said that it is covered with salt. Not a leaf remained on the trees. वहां पर पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था. प्लीज नोट डाउन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. सिंपल सेंटेंस इज नॉट गिवन. नॉट अ लीफ रिमेन. व्हेन वी वांट टू पुट स्ट्रेस on something, emphasize something, we use these type of emphatic sentences. You have seen in the previous sentences also. Did resemble, जब ऊपर कह रहा है ना, did resemble coins, that is also emphatic form. So he wants to put stress on this idea, and he says not a leaf remained on the trees, कि पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं रहा. The corn was totally destroyed. पूरा अनाज उसका destroy हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया. The flowers were gone from the plants. सारे फूल जो थे पौधों से गिर गए. Lenko's soul was filled with sadness. और उसकी आत्मा जो थी वो उदासी से भर गई. Was very sad now. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. See what he said. When he noticed that now the storm had stopped, सारा कुछ नष्ट हो गया, और जैसे ही वो तूफान बंद हुआ, he was very sad, और वो बाहर जाकर खेतों के पास खड़ा होता है और अपने बेटों को क्या कहता है? A plague of locusts would have left more than this. What is a plague of locusts? You can see the meaning given in your book only. This locusts are the insects which fly in big swarms. Groups में locusts जो हैं वो घूमते हैं, and they destroy the whole crop. पूरी फसल जो है उसको नष्ट कर देते हैं. प्लेग और लोकस्ट, जैसे आप कहते हैं टिड्डी दल का झुंड, सुना होगा आपने अपने साइंस में कि क्रॉप्स को नष्ट कर देता है. तो उसके लेंचो अपने बेटों को क्या कह रहा है कि अगर इन खेतों के ऊपर कोई लोकस्ट का अटैक हुआ होता तब भी कुछ ना कुछ बच जाता. वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब इससे ज्यादा बच जाता. हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कि अब इन हेल्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो उसको क्या नजर आ रहा था कि इस साल उनके पास कोई अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. और वो रात बड़ी दुखदायी रात थी उनके लिए. बहुत दुख में, परेशानी में और उदासी में उसने वो रात काटी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. जितना उसने मेहनत करी थी सारा साल उस फसल के लिए, वो पूरी खत्म हो गई. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. We will all go hungry this year. See the problems he was facing now, because there was no one in that valley. That was the only single house in that valley. So there was no help. उनको लग रहा था कोई help नहीं है, और there is no corn, no crop they were having. So he felt that they will all go hungry this year. All here refers to all his family members, कि उसको और उसकी सारी फैमिली को उस साल भूखे रहना होगा. उनको कुछ भी अनाज जो है वो नहीं मिलेगा.
So इस तरीके से he was very sad and in sorrowful mood. Now beta, if you have any problem, you can ask your problems. We are left with only 2 or 3 minutes, and revise your chapter and try to find out the answers given at the back. The part which we have read, after that there is one oral comprehension check. 4 questions are given. You must go through those questions and find out the answers. We will discuss it tomorrow. Okay. Now I'm giving you time. If you have any problem, you can ask your questions.